Hello and welcome to a special review of the T20 League, the first match of this year's IPL. Kolkata Knight Riders finally winning it in style. But you know what? Rima ji has a smile on her face for one reason. महेंद्र सिंह धोनी ने उनको खुश कर दिया है. जो भी आज मैच देखे हैं वो घर जा रहा है एज अ हैप्पी पर्सन. कोलकाता हालांकि मैच जीता है बट आईपीएल जीत गया, इंडियन क्रिकेट जीत गया. महेंद्र सिंह धोनी ने सबको खुश कर दिया. रीमा मल्होत्रा, देवाशीष सेन, वेलकम. हम लोग एक स्पेशल इंटरव्यू भी सुनेंगे काशी विश्वनाथ से, चेन्नई सुपर किंग्स का सीईओ, उनका स्टेटमेंट आपको सुनाऊंगा. बट फर्स्ट थॉट्स, रीमा मल्होत्रा, फर्स्ट थॉट्स ऑन द मैच. गुड स्टार्ट बाय केकेआर. आई मीन चारों खाने टिक मैं नहीं कहूंगी क्योंकि डेथ बॉलिंग अभी भी एक कंसर्न मुझे लगा, लेकिन श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी स्पॉट ऑन थी. जो बॉलिंग चेंजेस है, स्पेशली वो मूव की उमेश यादव को तीसरा ओवर कंटिन्यू कराया पावर प्ले में ही. अच्छी गेंदबाजी करते, 2 विकेट भी उन्होंने ली. और उसके बाद जो स्पिन डियो थे वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी थी. तो ये आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव था. डीप है बैटिंग लाइनअप, डेप्थ है उनकी बैटिंग लाइनअप में, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है. लेकिन डेथ बॉलिंग अभी भी कंसर्न है. लेकिन अगर सीएसके की तरफ जाऊं तो माही का मैजिक कह सकते हैं, द फिनिशर इज बैक. चाहे वो आज कैप्टन नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने नॉक खेली, मैं उनकी इनिंग्स देख रही थी कि पहले 25 बॉलों पे सिर्फ 15 रन थे और उसके बाद 38 बॉल्स 50 रन. अगर कोई स्कोर 61 फॉर 5 से 131 लेके जा सकता है तो उसमें इस इनिंग का बहुत बड़ा योगदान था. लेकिन काफी कुछ अभी भी होमवर्क करने को है क्योंकि एक तो विकेट टेकर उनके दीपक चाहर कुछ मैचेस में नहीं है जब तक वो फिट नहीं होते. मोइन अली नेक्स्ट मैच तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे तो वो एक बूस्ट होगा सीएसके के लिए. काफी कुछ है, लेकिन एक पॉजिटिव सबसे बड़ा माही इज बैक. So, Devashish, taking a cue from what Rima Malhotra is saying, if 15 of 25 and then 50 of 38, why is Mahendra Singh Dhoni not going to bat at 4? Give him that extra number of balls because he will need that extra number of balls. अगर वो 4 में बैटिंग करते हैं, ये 10-15 बॉल उनको पहले मिल जाता है, then he can accelerate. Again, that question will come up. Why should Mahendra Singh Dhoni not bat higher up the order? Devashish Singh. And that's a call that Ravindra Jadeja will have to take, because now that he's the captain, obviously you can still see that Mahendra Singh Dhoni, that is what Mahendra Singh Dhoni is all about. Means he always takes his own call. Means you have seen it when he was captaining the Indian team also. He invariably used to come lower down the order. But there has been questions raised that why is he not promoting himself up the order. But it's a valid point. That means one, considering the batting order of CSK, see he can bat more freely, just as was the case with Ajinkya Rahane opening the batting today for KKR. You can see, means obviously I still doubt whether Ajinkya Rahane will stick to his position once Aaron Finch comes into the side, because he's definitely going to. But then some of the shots that Rahane played today, that those were just graceful. The cover drive, the straight drive, the pull shot that went for 6. I think those were simply class. Means one shouldn't level someone that he's a T20 player, he's a test cricketer, he's a red ball specialist. Ajinkya Rahane still has a lot of fire in his belly. You know, Devashish is making this point, Rima ji, about stereotypes. वो stereotypes को break कर रहे हैं, सही कर रहे हैं. I mean, अगर हम लोग दूसरा जो stereotype है about age, Mahendra Singh Dhoni 40, Dwayne Bravo 38. You know, come on. I mean, where is age? Age is just a number. I mean, if you see performance and you say, boss, that's what it is all about. आपका thoughts on that? And also another point आपने already जिक्र किया है, Shreyas's captaincy. You know, this was very Dhoni. दीपक चाहर को वो 3 ओवर दे देते हैं जब वो रिदम में रहते हैं. Again, उमेश यादव को 3 ओवर दे देना, शिवम मावी को 3 ओवर दे देना. I thought it was aggressive on the money captaincy. Your thoughts? सबसे पहले तो मैं धोनी की बात करूंगी. जो आपने बोला ब्रावो और धोनी, एज इज जस्ट अ नंबर, स्पॉट ऑन. अब परफॉर्मेंस पे जाइए. जो किसी एक को लेबल करना कि वो T20 बैटर है या टेस्ट प्लेयर है, जिस दिन वो अच्छा खेलता है. हम रहाणे की बात करें ना, डोमेस्टिक खेले हैं उन्होंने, तो कहीं ना कहीं रन्स उनके पास हैं. थोड़ा टाइम पहले जाएं तो जैसे कि आपने कहा भी था, उस टाइम भी कैप्टन करते टेस्ट मैच में, लेकिन फॉर्म खोई थी. लेकिन फॉर्म खोती है तो डोमेस्टिक में वापस आई है, बैक टू द बेसिक्स, और वो उन्होंने होमवर्क किया है. आज मौका मिला. कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ अपॉर्चुनिटी और एक तरफ चैलेंज. आज दोनों थे उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं रहाणे ने एक मौका खोया है. स्टार्ट अच्छी दिलवाई, 34 बॉल्स 44 रन उनके थे.
सो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज इतना बड़ा स्कोर भी नहीं था कि आपको स्कोर बोर्ड प्रेशर भी नहीं था, 131 स्कोर था, तो मुझे लगता है कि ये जो स्टार्ट है ना, ये इसको बड़े में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको इस Spot केकेआर on. में अपनी जो प्लेस है वो सीमेंट करनी है, क्योंकि मैकलन है जो उनका थॉट है ना थोड़ा डिफरेंट है, और तो T20 में अच्छी नहीं खेली है, लेकिन प्लेस सीमेंट करने के लिए इससे बेहतर खेलना होगा। श्रेयस अय्यर की बहुत कैप्टनसी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी बैंग ऑन। देखिए हमेशा वो विकेट की ना तलाश में दिखे, कि उनको लग रहा था कि हर हमेशा उनको विकेट की दरकार नजर आई, कि अगर आप एक के बाद एक विकेट लेंगे तो कभी भी सीएसके को मैच में आने की वापसी दी नहीं, मौका नहीं दिया उन्होंने। आखिरी 3 ओवर जरूर सीएसके के नाम रहे, लेकिन उससे पहले श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी, बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। Now, if I come to the CSK batting, I mean, Jadeja and Dhoni, by the time they came in 4-5 down, run out, do you think that's where they lost the plot? I mean, basically CSK lost the match in the first 10 overs. Am I right to say that? Absolutely, absolutely. Because losing those 3 early wickets, and it was a very uncharacteristic knock by Jadeja. Means Jadeja, we know how aggressive he is. He played his only attacking shot the last ball that went for a six, Six. which is very uncharacteristic of Ravindra Jadeja. Ravindra Jadeja, he played how many balls? If I'm not from 28 balls, he scored 26. On any other day, he would have scored a 40 odd, 45 odd, and that 20-25 runs would have made the difference. But the Chennai were a bit Was it unlucky captaincy as well. pressure? Was it captaincy pressure? It's too early to comment Buriada because it's only the first match. So we must not judge by just one match. No, I'm not judging. I'm just, because Ravindra Jadeja is such a flamboyant, super talented man. Yes, he was holding it back. सबके साथ होता है, हो सकता है एक मैच आप पहला मैच आप मार नहीं पाए, उल्टा तरफ माही मार रहे थे. But just trying to understand, because I thought Chennai was a little, and the fact that he got Ambati Raidu, that run out happened when he was batting, also sort of broke Absolutely. his rhythm a little bit, is what I thought. Rimaji, before I go back to Devashish again, two questions. One, Umesh Yadav. Look at that wicket and look at that spell from Umesh Yadav. You don't obviously talk about Umesh Yadav, but look at that man's performance. I thought he was the one, Ruturaj Gaikwad, and that second wicket immediately put pressure on CSK. So, your thoughts on that Umesh Yadav spell, and secondly, those two spinners in tandem, Varun Chakravarti and Sunil Narayan, that middle overs, put tremendous amount of pressure on that CSK lineup. Your thoughts? से उमेश यादव को न्यू बॉल दिया गया, मौका था, और ये मुझे लगता है ये उनके लिए ना मेक और ब्रेक सीजन होने वाला है, क्योंकि नया बॉल से आप विकेट अगर लेते हैं ना, तो यानी कि आपका जो सीजन से स्टार्ट जिससे उम्मीद की जाती वो आपको मिला। स्विंग उनके पास अच्छा है, पेस थी उनके पास, अच्छी लाइन में उन्होंने बॉलिंग की, हालांकि फर्स्ट बॉल नो बॉल थी, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया, और अगर आप दोनों ही ओपनर्स को करते हैं तो आप किसी ना किसी तरह बैटिंग लाइनअप पे डेंट डालते हैं, और वही आज सीएसके की बैटिंग में उन्होंने किया भी है। तो उनका रोल इस केकेआर बॉलिंग लाइनअप में बहुत अहम रहने वाला है। अच्छी बात यह है कि शुरुआत अच्छी हुई है। आई होप उनका सीजन इस शुरुआत की तरह जाए, अच्छा जाए, क्योंकि ऐसे पेसर्स आपको बार बार मिलते नहीं है। थोड़ा जो रन लीक करने की उनकी जो आदत है वो शायद इस सीजन वो कम होती हुई दिख सकती है, क्योंकि T20 इज ऑल अबाउट मोमेंटम, वो उनको मिल चुका है। और मुंबई की, महाराष्ट्र की विकेट देखी जाए तो उसमें बाउंस होगा, उसमें स्विंग देखने को मिलेगा इनिशियली कुछ मैचेस में, तो उसका वो फायदा उठा सकते हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए एक अच्छी शुरुआत है। CSK bowling looked a little rusty, Devashish, except Dwayne Bravo. Adam Milner sprayed it around. Tushar Deshpande wasn't very impressive at the start. Again, leg stump balls to Ajinkya Rahane. Your thoughts on that? Invariably, it boils down to the absence of Deepak Char. As रीमा जी ने प्री शो में भी कहा है कि दीपक चार is an integral part of this CSK attack. And with him missing the initial first few matches, I don't know whether how will the CSK management make this up. And I believe, and if you can look at the speed gun, means T20 cricket does prove that you need some pace. Means it's not only about the variation, you also require pace. You see Umesh Jadav's the top 5 fastest delivery, it was all bowled by Umesh Jadav. He clocked 142 kilometers per hour, the fastest in the match. And if you look, when Pat Cummins comes in and joins the team KKR squad, just see the pace, the firepower in the KKR bowling, which I think Chennai will be missing, because they lack that firepower, they lack that fast bowling. I think they are a little bit weak on the weaker side as far as fast bowling is concerned.
Okay, last 5 minutes on the show. Let's go back to Dhoni. I mean, it is Dhoni's night in a way. I mean, yes, इसीलिए IPL इतना इंटरेस्टिंग है रीमा जी कि हालांकि CSK हार गया, बट महेंद्र सिंह धोनी का वो इनिंग्स कैसे कर सकते हैं? 162 डेज उन्होंने मैचेस नहीं खेला, 6 months, उसके बाद वापस आके पहले ही मैच में IPL का पहला 50. Try to get into his mind, Rima ji, and tell me, MS Dhoni the phenomenon, unreal. देखिए, एक होता है बल, एक होता है बुद्धि. मुझे लगता है कि वो ना यहाँ से क्रिकेट खेलते हैं. जो इनिंग्स उन्होंने खेली, पहले थोड़ा टाइम लिया. अगर हम उनकी इनिंग्स को थोड़ा एनालाइज करें तो दोनों स्पिनर्स को उन्होंने अटैक नहीं किया, बहुत केयरफुली खेला. कुछ मिस भी हुआ उनसे, लकी भी रहे वहां पे. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो स्ट्रगल किया और उसके बाद सेट होने के बाद वो इनिंग को बिल्ड करने के बाद एग्रेशन शो किया. तो उनको पता है कि कब बैट चलाना है, कब इनिंग्स को विकेट थ्रो नहीं करनी. 61 for 5 था. अगर वो रैश शॉट खेलते शायद विकेट चली जाती और एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक भी ना पहुंच पाते. अच्छी बात ये थी कि उन्होंने समझा कि सुनील नारायण स्पेशली उनको बहुत अच्छी बॉल डालते, विकेट नहीं थ्रो की, रन्स भी नहीं बनाए उनके अगेंस्ट, लेकिन अच्छी बात कहते हैं विकेट थ्रो नहीं की. तो वो ना यहाँ से खेलते हैं और उससे मुझे लगता है सीखना चाहिए. काम लगे, कंपोज लगे, एग्रेशन जब चाहिए था तब उन्होंने दिया. जैसे कि आपने कहा था, क्या वो नंबर 4 पे बैट कर सकते हैं? कर सकते हैं, और हम ये कई सालों से बात कर रहे हैं, बट मुझे अभी भी लगता है कि वो करेंगे. अभी भी नहीं लगता है. On this note, Swapnil, our producer, can you play that quick little clip from Kashi Vishwanath, the CSK CEO, on MS Dhoni? MS Dhoni, forever the CSK leader. Listen in to this quick comment from Kashi Vishwanath on MS Dhoni, and I'm back with Devashish Sen. Swapnil. MS not be captain, it's fine, but he's still the leader. He's still the leader in the dressing room, in the ground, in your camp, in every place. MS Dhoni remains the leader. MS Dhoni is the leader forever for us. Say it again, one more time. MS Dhoni is the leader for us forever. What a comment, what a leader. Always going to be the leader. I won't stretch this show too long because don't forget, tomorrow morning, the Indian women take on South Africa in a virtual quarter-final in the World Cup. All of us will have our eyes glued to that, and we will obviously be back on Rev Sports. Final comments from Devashish Sen and Rima Malhotra. Devashish, 2 matches tomorrow. Mumbai, Delhi, Punjab, RCB. Big double headers, red teams, Punjab and RCB, and Mumbai and Delhi. Your quick thoughts. Yeah, Boria, it will be good to see that most of these teams will have new captains. And that will be something refreshing for the fans. Obviously, when Fab du Plessis walks in, because of the fans just like MS Dhoni, Chennai Super Kings, you would invariably think that MS Dhoni walking in for toss, but now you will have Fab du Plessis going in for the toss. That will be one very interesting thing. Also, Mayank Agarwal leading the Punjab Kings side. So that will be an interesting battle on the cards. And also the second match will also be very interesting. So lot to look forward to. But then just as you have mentioned that as Indians, we should all be first looking at the women's important match against South Africa. Yeah, I didn't ask you that because I'm going to ask Rima ji that. Yeah, absolutely. But invariably, as a fan, as an Indian fan, obviously I would be more interested in Indian women doing well against South Africa and making it to that semi-final. 200% right. 200% right. IPL has just started. True. Yes, Swapnil, you can get Priya in as well. I'll take a quick comment from her. There's Priya. But before that, Priya, welcome back. I know you're hosting a show. I'll take a comment from you on MS Dhoni, the innings. But before that, Rima ji, 5 hours from now, Mithali Raj and Jhulan Goswami perhaps playing one of the most important games of their career. Your thoughts on that?
और अगर मैं उनके सामने बैठी होंगी तो मैं उनको बोलूंगी मित्तू झूलन अभी नहीं तो कभी नहीं, यही मौका है। और दो लेजेंड्स हैं, लेजेंड विद द बैट, लेजेंड विद द बॉल, और यही मौका है। और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये दोनों जो है ना, ये टीम को थ्रू करवाएंगे। मिताली राज की एक बड़ी इनिंग ड्यू है, और वो जब जब इंडिया मुश्किल में आती ना, तब तक वो मैजिकल इनिंग खेलती है। तो उम्मीद करूंगी कि उनकी वो इनिंग्स कल आए और तब आए जब इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड आई होप एंड आई आप एम श्योर कॉन्फिडेंट है इंडिया विल रीमा डू जी? वेल। कॉन्फिडेंट है आप? कॉन्फिडेंट है आप? देखिए बिल्कुल हूँ क्योंकि स्मृति मानदाना, शिफाली वर्मा अगर अच्छा स्टार्ट दिलवाते हैं, नीचे हरमन है, मिथाली है, और जो दो हमारे ऑलराउंडर्स हैं, स्नेह राणा, पूजा वसकर, वो अच्छा करें। अगर बैटिंग लाइनअप ने अच्छा कर दिया तो जो गेंदबाजी है वो अच्छी हो ही रही है। तो मुझे ऐसा लगता है डू और डाई सिचुएशन है, एंड दिस टाइम इंडिया विल डेफिनेटली डू वेल। Fingers crossed, because all of us want that women's team to make the semi-finals. Far more important for Absolutely. each of us as Indians. Priya, we were about to close the show, so thanks for coming back quickly. Your thoughts on MS Dhoni and that legendary, that cult of MS Dhoni scoring the first 50, and of course Kolkata closing it out. Your thoughts on that MS Absolutely. Dhoni? Yeah, this is why I actually logged on, because I really wanted to pass my comments on this. Dhoni, of course, is Dhoni. He did his best that he could to save the team, but 50 runs, not bad at all. But then, unfortunately, it could not happen. Full credit goes to KKR bowlers. I think they did a brilliant job on the field today, and restricted the total to 131. And as I said even before, that the score was low. The we expected it to go up to 170, 180 maybe today, but it did not. It restricted for 131, and I guess all of us are going home happy, or all of us are taking the fact that MS Dhoni has set the IPL on fire. 2.0 got off to a rollicking start, because everyone will talk about that innings. But it's time to close the show. We've got two exclusives lined up for you tomorrow. For the PBKS Punjab Kings and RCB game, we have Mohammad Siraj, an exclusive with Mohammad Siraj, one of my favorites. And we've also got an exclusive with Mayank Agarwal. So exclusives with Mohammad Siraj and Mayank Agarwal for you tomorrow on Rev Sports. But more importantly, multiple shows with Rima Malhotra and a whole lot of us in the morning, 6:30 India time, Indian women versus South Africa women. The preview will start at 6 a.m. in the morning. Fingers crossed, most important game of their careers perhaps, World Cup on the line. On that note, thank you very much, Rima Malhotra, Priya, and Devashish Sen. We are back tomorrow morning on Rev Sports. Thank you very much for watching. IPL got off to a great start, but don't forget, put on your alarms. 5 hours, get up, morning tea, support Mithali Raj and company. Thanks and good night. Thank you. Thank you.